प्रकृतिपमान्यतिमता स्त्रीपुंसदेहास्त्रितो जस्त्रेधा विधि विष्णु शंकर वसु अर्धारी दृश्यते श्रीमन्नीलगिरौ च दारुतंद्रु योऽसौ चतुर्धा स्थितो राधा कृष्णतनुधरो विजयते वृंदावने सा प्रभु। गिरिया राजा रघुनाथ सिंह महापात्रଙ୍କ रचित अभिनय दर्पण प्रकाश असंयुक्त हस्त वर्णना संपर्क में पाठ करुछि। आकुंचितेन अंगुष्ठेन तर्जनी मूलगामिना संहतांगुलिको हस्तः पताक हस्तैर्जते। नाट्यारंभे वैनायकादि तालादौ पुष्पांजलि कृते तथा रंगस्थले वर्तते यत् तन्नाट्यमभिधीयते। नर्तकाद्यालुकालुक्त्या हस्ताभिनय भंगिभिः ताले वैनायके रंगे पताका हस्तयोजना। बारिबाहे मेघाभिनये कराबधो मुखौ कृत्वा कंपमानौ च पार्श्वयोः ऊर्ध्वं प्रसर्पन्तौ बारिबाहे नियोजयेत्। वने नंदनादि कृतक वन निरूपणे हस्तौ प्रसार्य पार्श्वाभ्यां क्रमेणाधोमुखं नयन् ऊर्ध्वं संकोचयन् भूयो जुज्यात् वन निरूपणे। गहने महारण्ये ऊर्ध्वं प्रसार्य तौ हस्तौ क्रमादूर्ध्वं निकोचयन् पुनः प्रसार्य संकोच्य महारण्ये नियोजयेत्। वस्तु निषेधने द्रव्याणां निषेधानुकरणे पराभिमुखमूर्च्छन्त्य पताका हस्तमग्रतः कंपेनाभिनयं द्रव्यं निषेधे विनियोजयेत्। कुचस्थले स्तनमंडलानुकरणे पताका हस्तौ स्तनयो रूपरी भ्रामयन् स्थले तिर्यक् कृत्वा कुर्परौ द्वौ विनियुज्यात् कुचस्थले। निशायाम् अर्धरात्र निरूपणे अधोमुखौ भ्रुवोर्देशे तिर्यक् कृत्वा प्रदर्शयन् अग्रमग्रं समुत्सार्ज्य रात्रियोगे नियोजयेत्। गंगादि नदी निरूपणे उत्तानास्यौ करौ कृत्वा वाम पार्श्वात् क्रमेण च दक्षान्तं बाहयन् मन्दं जुज्यान् नदी निरूपणे। अमरमंडले देवता समूह वंदने ऊर्ध्वमूर्ध्वमुखौ कृत्वा हस्तौ प्राक् पश्चिमं क्रमात् भ्रामयित्वा नियोजाग्रं देववृंदे नियोजयेत्। तुरंगे अश्वारूढ़ पुरुष निरूपणे सपताकं दक्षहस्त मूर्ध्वमुच्चै प्रदर्शयन् तिर्यक् कृत्वा शिरः काया दस्वार्थे विनियोजयेत्। खंडने पताकस्य च वामस्या गुष्ठं दक्षमुखस्य च पश्चान्मुखस्य दक्षस्य स्पृशन्ति चेत्कनीनिका ऊर्ध्वदेशात् वक्षपार्श्वे अधः प्रतिनिपातितौ खंडने च प्रयोक्तव्या भरतस्यानुशासनात्।
वायौ उद्भास्यौ बलितौ मूला दधो दक्षिणतः श्रुतेः आत्मनोभिमुखौ तिर्यक् वाताघाते नियोजयेत्। शयने कपोलाभिमुखं नीत्वा पताकस्तुभयोरपि गण्डस्थलतले सम्यक् दर्शयेत् शयनक्रमे। गमनोद्यमे पताकहस्तौ उत्तानौ सम्पूटीकृत्य योजितौ अग्रतश्चालितो मन्दं योजयेत् गमनोद्यमे। प्रतापे आत्मनोभिमुखौ कार्यौ पताकाबूर्ध्वसंगतौ सूर्यतेजनिराकारौ प्रतापे विनियोजयेत्। प्रसादे सपताकः दक्षहस्त मूर्ध्वमुच्चैः प्रदर्शयन् तिर्यक् कृत्वा शिरोदेशे प्रसादे विनियोजयेत्। चंद्रिकायाम आह्लादकरणे अधोमुखं करतल मूर्ध्वतः कंपयन् मुहु अधः आपादयन् मंदं चंद्रिकायां नियोजयेत्। घनातपे तीक्ष्ण तेज विशेषे पार्श्वे प्रसार्य हस्तौद्यौ नीत्वा चोर्ध्वमधोमुखौ कंपमानांगुलीकौ च नियुज्यात् तीक्ष्ण तेजसी। मेघाच्छन्ना तप निरूपणे ऊर्ध्वं वक्त्रं करद्वन्द्व मूर्ध्वोपरि विवर्तयन् अधो मुखाञ्जलिं कृत्वा नियुज्यात् सघनातपे। कबाट बंधने कबाट कीलन विधौ अग्रे कृत्वाञ्जलिं भूयो प्रसार्य स्वाभिमुख्यतः पुनः पराङ्मुखं कृत्वा जुज्याद् विररबन्धने। सप्त विभक्त्यर्थे सप्त विभक्तिनां कारक प्रयोगे प्रसार्य दक्षिणं हस्त मयं राजेति निर्दिशन् अग्रे ह्यूर्ध्वमुखं कृत्वा प्रथमार्थे नियोजयेत्। राजानां पश्य इतिवत् पुरो वस्तु विनिर्दिशन् क्रमादाकुञ्च तस्याग्रं द्वितीयार्थे नियोजयेत्। राज्ञा कृतमिवादिश्य तिर्यगुत्तानहस्तकम् अधो निपात्य तन्मन्दं तृतीयार्थे नियोजयेत्। राज्ञे देयमिति वासौ पाणिमुत्तानमानयन् सव्ये नियोज्य तन्मन्दं संप्रदाने नियोजयेत्। नृपात् प्राप्तमिति वाग्रे प्रसार्योर्ध्वमुखौ करौ शनै सत्सन्निधिं नीत्वा पंचम्यर्थे नियोजयेत्। राज्ञश्चायमिति वासौ पाणि चाधुमुखौ लयन् पुनरुर्ध्वमुखौ कृत्वा संबंधे च नियोजयेत्। अधोमुखौ करौ कृत्वा पीठे तिष्ठत्यनुनयन् अधो मंदं नयन् किंचित् सप्तम्यर्थे नियोजयेत्। तरंगे सागरादि तरंग निरूपणे ऊर्ध्ववक्त्रौ करौ कृत्वा स्वाग्रतस्त्वन्नतोन्नतौ क्रमयन् निवसन्दर्श्य तरंगे विनियोजयेत्। नारीणां नाभिस्पर्शे सुंदरीणां क्रीडासक्त चिंतानां नाभिस्पर्शे नाभेरभिमुखं कृत्वा पताकाग्रं करस्य च उत्तानस्यं दक्षकरं
नाभिस्पर्शे नियोजयेत्। सुराणां वीरवादने रणशूराणां सुरतशूराणां च वीरवाद्यानुकरणे अधोमुखौ करौ कृत्वा कंपयन् ऊर्ध्वमुन्नयन् वादनानुकृतं कृत्वा प्रयुज्यात् वीरवादने। करौ स्वाभिमुखौ कृत्वा नमनोन्नमनादिना चालयन्ननुजुञ्जीत रतरंगानुकूजने। वामने वामनावतारे खड्गपुरुष निरूपणे अधोमुखस्य हस्तस्यो पर्युत्थानं परं करं स्वल्पान्तरं दर्शयित्वा युञ्जात् वामनरूपणे। रूपे सौंदर्य उत्तानाग्रं दक्षकरं दर्शयित्वा पुरोमुखं किंचिदुच्चाल्य तस्याग्रं निजुज्याद्रूपरूपणे। स्पर्शने स्पर्शनयोग्य द्रव्य निरूपणे अधोमुखं स्वहस्ताग्र मग्रमग्रं प्रदर्शयन् स्पर्शानुकारी तत्कृत्वा स्पर्शने विनियोजये। पतने भूपतनयोग्य द्रव्य निरूपणे अधोमुखं करौ चोर्ध्वं कृत्वोर्ध्ववदनौ पुनः अधो निपात्य परितः पतने विनियोजये। जये जयेति प्रयोग निरूपणे उत्तानास्यौ करौ तिर्यक् तदग्रं निक्षिपन् मुहुः जयानुकरणं कृत्वा जयवादे निरूपयेत्। व्याप्तौ सर्वरि निरूपणे अधोमुखौ करौ पूर्व मूर्ध्वमुत्तोल्य चक्रमात् अधो निपात्य पार्श्वान्ते व्याप्ति कृत्ये नियोजयेत्। व्यजने व्यजनयुक्त क्रिया निरूपणे तिर्यक् प्रसारितकरं दक्षिणं विजयन्निव चालयेदभितो मन्दं युज्यात् व्यजनकर्मणि। पूर्णचंद्रे पुण्येन्दु दर्शने विलग्नमूला बुद्ध्वास्यौ करौ चोर्धं विवर्तयन् मंडलानुकृतं कृत्वा पूर्णचंद्रे नियोजयेत्। भानुदय दर्शने अग्रे प्रसार्य हस्ताग्रं दक्षिणं भ्रामयन् पुरः दर्शयन् निवतद्बिम्बं नियुज्यात् भास्करोदये। निरन्तरे ऊर्ध्वास्यौ तौ करौ तिर्य ऊर्ध्वं युञ्ज्यादधो मुखौ नाभिदेशे स्थिरीकृत्य युञ्ज्यात् सांद्र निरूपणे। विस्तारे सर्वत्र विस्तार निरूपणे अग्रतस्तालिकां कृत्वा तिर्यगूर्ध्वमुखौ करौ पुनः प्रसारयेत् दूरं युञ्ज्यात् विस्तार सूचने। विटपिनां सांद्र साखीनां छाया निरूपणे मिथ ऊर्ध्वमुखौ लग्नौ पुनः कृत्वा ह्यधोमुखौ ऊर्ध्वे प्रसारयन् मन्दं तरुच्छाया निरूपणे। भय सूचने भयानुकरणे तिर्यक्कराबुरो देशे कंपयित्वा मुहुर्मुहु अंगं संकोचयन् युञ्ज्यात् भयकृत्यानुशोचने। पापे
पाप शब्दानुकरणे पताक हस्ता बुद्ध्वाग्रौ श्रुति देशे निवेशयन् बिभत्सयन् निबक्षिप्रं जुञ्जात पापानुसूचने। देवस्तुतौ इष्टदेवतानुकरणे अन्योन्याग्रं चतुमूलौ कराबभिमुखस्थितौ हृद्देशे योजयन् जुञ्जात देवता ध्यान कर्मणि। शैलारोहणे शैलानुकारी करयो अर्मिथो धृत्वा तलद्वयम् अधः पताकया क्रम्य शैलारोहे नियोजयेत्। चित्ते कलुष हृदयानुकरणे हृद्देशे विनिवेश्य स्वं कंपमानं करं बुधः द्यौवा भिनीय नयविद दर्शयेत् कलुषं मनः। तापे विरह जनित संतापानुकरणे हृदि चाभिमुखं हस्तं कंपयन् मुहुरग्रतः विरहोत्थित संतापा भिनये विनियोजयेत्। प्रसन्न हृदये निर्मलान्तःकरणानुसूचने हृदि कृत्वा करौ लग्नौ प्रसाज्याभिमुखौ पुनः प्रसन्न हृदयत्वस्या भिनये योजयेत् बुधः। रक्तवर्ण सूचने तिर्यक् कृत्वा करौ पार्श्व द्वये संकम्पयन् मुहुः रक्तस्राव बदालोच्य रक्तवर्णे नियोजयेत्। नीलवर्ण सूचने अग्रतो भीमुखौ हस्तौ कृत्वाधो मुख संस्थितौ नीलवर्णानुकरणे नर्तको विनियोजयेत्। पीतवर्ण सूचने अग्रे पूर्वमुखं दक्ष हस्तं संदर्शयन् पुरः पीतवर्णानुकरणे नियोज्यात् नृत्यकर्मणि। शुक्लवर्ण सूचने अग्र प्रसारितकर मुत्तानास्यं प्रदर्शयन् शुक्लवर्णानुकरणे योजयेत् तादृशं करम्। शीतले शीतल स्पर्शानुकरणे अधो मुखं करतलं दक्षिणं दर्शयन् स्थिरम् अधो नयन् शीतलस्या नुकृतौ विनियोजयेत्। शिशु भावे शिशु प्रमाण दर्शने उत्तान मुखवामस्यो पर्युर्ध्व मुखमग्रतः स्थापयन् स्वल्पमानेन शिशु भावे नियोजयेत्। इति पताका हस्ताभिनय निर्देशः। त्रिपताका हस्तलक्षणम् उक्ते पताका हस्ते चेत् षड्वक्रानामिकाङ्गुलिः त्रिपताककरः सस्यान् नाट्याभिनय कर्मणि। मुकुटे किरीटानुकरणे त्रिपताकौ करौ मूर्ध्नि निवेश्वोर्ध्वं शिखौ मिथः संयोज्य दर्शयित्वासौ जुञ्जान् मुकुटसूचने। वृक्ष भावे तरुभावानुकरणे उदग्रं दक्षिणकरं कंपयन् मूर्ध्वमुन्नयन् दर्शयित्वा ग्रतो वृक्षा नुकारे विनियोजयेत्। वज्रे दम्भोळीकरणे उदग्रं दक्षिणकर मूर्ध्वमुच्चै प्रदर्शयन् उत्क्षेपणाकृतिं कृत्वा वज्रास्त्रे विनियोजयेत्। उद्धत पुरुषे पार्श्वे तिर्यक् करौ कृत्वा कंपयन् ऊर्ध्वमुन्नयन् पुरुषौ धत्य कथने यथार्थं विनियोजयेत्।
पार्श्वे इंद्ररूपानुकरणे वज्रानुकारी स्वकरम कृत्वा दक्ष शिरोन्तके अधश्चाधु मुखम वामम वासवे विनियोजयेत् केतकी कुसुमे तस्या भावानुकरणे करम स्वाभिमुखं कृत्वा दक्षं ह्यूर्ध्व शिखं द्रुतं नियोजयेत् केतकीनां कुसुमानां कृतो बुधः दीपे दीपानुकरणे उत्तानं दक्षिणकरं प्रदीपकलिका निभं दर्शयन् दीपकथने पिपताकं नियोजयेत् बह्निज्वाला विजृंभणे अग्निज्वाला प्रकाशन कथने अधः उत्तान बदनम करमग्रे प्रकंपयन् ऊर्ध्वमूर्ध्वं नयन जुंज्या दग्निज्वाला विजृंभणे बाणे सरप्रयोगानुकरणे अंगुष्ठ मध्य देशे तु तर्जन्यग्रम नियोजयेत् ऊर्ध्वमुत्क्षिप्य सहसा निजुज्यात बाण कर्मणि जृंभणे जृंभणानुकरणे जृंभानुकारी वक्त्रस्य सविधे संमुखं करम दर्शयित्वा निजुञ्जीत नाट्ये जृंभण सूचने इति त्रिपताक हस्तलक्षण निर्देशः अर्धपताक हस्तलक्षणम त्रिपताक करस्यास्य कनिष्ठा कुंचिता यदि सहस्तोर्धपताकाख्य नाट्याभिनय कर्मणि पल्लवे कोमलपत्र भावे अधस्तादूर्ध्ववदनं हस्तमर्धपताककं नताग्रं दर्शयित्वाग्रे जुञ्जात् पल्लव कर्मणि फलके ललाट कथने अन्योन्याग्रजुतोत्तान तिर्यगतकरद्वयं ललाट देशे संयुज्य फलके विनियोजयेत् तीरे नदी तीरे उत्तानाग्रकरौ स्वाग्रे परितो वाम दक्षिणं चालयित्वा निजुञ्जीत नदी तीरानुसूचने उभयोर्वाचके परस्पर प्रतिकथने अन्योन्यासक्त शिखरौ करौ त्वभिमुख स्थितौ परिवृत्या सकृत्साग्रे वाचके विनियोजयेत् त्रक्कचे लोह करपत्रे तिर्यक्करं पुरः पश्चात् चालयन् करपत्रवत् सरलीकृत्य जुञ्जीत कर्कचाख्यान कर्मणि छुरिकायां छुरिकाहस्त प्रयोगे आकुंच्य दक्षिणकरं तिर्यगग्रं पुनः पुनः पुरः प्रक्षेपयित्वाथ छुरिकायां नियोजयेत् ध्वजे ध्वजानुकरणे अन्योन्य पुष्ट संलग्नौ कराबूर्ध्वगतौ पुरः निबध्य दर्शयन् जुञ्जात् ध्वज कर्मानुसूचने गोपुर अधो मुखौ करौ कृत्वा पुरस्तात् तोरणाकृति उच्चै प्रदर्शयन् जुञ्जान् नाट्ये गोपुर सूचने श्रृंगे श्रृंगानुकरणे उत्तानाग्रौ करौ कृत्वा संलग्नांगुष्ठपृष्ठकौ दर्शयित्वा पुरो मंदं निजुज्यात् श्रृंग सूचने इत्यर्थ पताका लक्षण समुद्देशः कर्तरी हस्त लक्षणम उक्तस्यार्ध पताकस्य
हस्तस्य तिर्यगुद्यते तर्जनी मध्यमे भिन्ने यदि स्यातां परस्परं लग्ने विलग्ने विरले कर्तरी हस्त उच्यते। स्त्रीपुंसयोर विश्लेषे वियोग कथने अधोमुखौ करौ कृत्वा तिर्यक् कृत्वा ह्यधोमुखौ संयोज्याथ वियोज्याथ युञ्जात स्त्री पुंग वियोजने। विपर्यास पदे विपर्यास पद विन्यासे अधोग्रं स्वकरं कृत्वा तिर्यक् कृत्वा ह्यधोमुखौ मिथोग्रं चालयन् पश्चात् पदन्यासे नियोजयेत्। विद्युत अर्थे चपलानुकरणे ऊर्ध्वमुत्क्षिप्यतौ हस्तौ तर्जनी मध्यमे मुहुः चालयित्वा निजुञ्जीत चपलाभिनये नटः। एक सज्जा विरहे भिन्न सज्जानुकथने उत्तान हस्तं क्रमशो धोमुखं दर्शयन् पुरः एक सज्जा वियोगे च तथैव विनियोजयेत्। इति कर्तरिहस्तलक्षण निर्देशः। मयूरहस्तलक्षणम् अंगुष्ठानामिकाग्रे द्वे संयुते चापराजदि प्रसारिताः स्युः कथितं मयूरकरलक्षणम्। मयूरे मयूरानुकरणे उदग्रं दक्षिणं हस्तं पराभिमुखमुन्नयन् चालयन् पार्श्वयोः किञ्चित् निजुज्यात् क्षितिसूचने। लतायां लतानुकरणे तमेव हस्तमुत्तोल्य मूर्ध्वमूर्ध्वं च कम्पयन् नीत्वा नियोजयन् नाट्ये लतानुकरणे नटः। हारधारणक्रमे पार्श्वयस्तु करौ कृत्वा ग्रीबातो हृदयावधिः आनीयो नियजुञ्जीत हारधारण सूचने। बलये मयूरहस्तौ विस्तार्य मणिबन्धे नियोजयेत् बलयस्यानुकरणे युञ्ज्यादभिनये नटः। नुपुरे मयूरहस्तौ करयो रन्योन्यं गुल्फशक्तयोः दर्शयित्वा निजुञ्जीत नुपुराभरणे नटः। इति मयूरहस्तलक्षणमिति। अर्धचन्द्रहस्तलक्षणम् तथा पताकहस्तस्य तदंगुष्ठप्रसारणात् तिर्यक्कृतस्य कथितः स्वर्धचन्द्रकरो बुधिः। कृष्णाष्टमी चंद्रे अर्धचंद्रानुकरणे तिर्यगूर्ध्वगतं हस्तं गगने दर्शयन्निव नियोजयेत् खण्डचन्द्रा नुकृतौ नाट्यवित् नटः। बाजीकरणे अधोमुखं वामहस्तं कृत्वाधः शिखरं पुरः दर्शयित्वा निजुञ्जीत बाजी वाहन कर्मणि। गलहस्तार्थके गलहस्तकर्मानुकरणे अधोमुखं दक्षहस्तं तिर्यक् कृत्वा पुरः पुरः मुहुः प्रक्षिप्य युञ्जीत गलहस्तकसूचने। भल्लहस्त प्रयोगानुकरणे तिर्यक् प्रसारितकरौ दक्षिणं सकुञ्चन् पुरः
पुनः प्रक्षिप्य जुंजीत भल्लायुध निरूपणे। अभिषेचन कर्मणि देवतानामभिषेकानुकरणे अधोंगुष्टं दक्षकरं तिर्यक् कृत्वा प्रदर्शयन् देवानामभिषेकानु कृतौ नाट्ये नियोजयेत्। प्रकृतानां नमस्कारे तन्नमस्कारानुकरणे तौ करौ सम्पुटीकृत्य शिरोदेशे नियुज्यते नियोजयन् नमस्कारे प्रकृतानां नमः पुरः। नाभे अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ मिथौ लग्नाग्रमूलकौ कृतांजलिः निजुञ्जीत नौकानुकरणे नटः। मत्स्य मत्स्यानुकरणे अधोमुखं वामकर माच्छाद्य च क्रमेण च अंगुष्ठौ पक्षवत् कृत्वा निजुञ्जान् मत्स्यसूचने। नितंबे नितंबानुकरणे कटौ निवेश्य परितः करौ तिर्यगधोमुखौ स्थिरं कृत्वा निजुञ्जीत नितंब स्थल दर्शने। कुररे कुरर पक्षी निरूपणे प्रसाज्य दक्षिणं हस्तं तिर्यगूर्ध्वो मधोमुखं पक्षपातानुकारेण जुञ्जात् कुररपातने। खड्ग दर्शने खड्गहस्तानुकरणे अर्धचंद्रकरं चोर्ध्व मुद्यम्य दर्शयन् पुरः निजुञ्जीत तथा नाट्ये खड्ग दर्शन कर्मणि। इत्यर्थ चंद्रहस्त लक्षण निर्देशः। अराळ हस्त लक्षणं पताक हस्तस्य यदि स्यादराळा प्रदेशिनी अराळ हस्तः सज्ञेयो जोज्योभिनय कर्मणि। विषे विषानुकरणे उत्तानकरहस्तस्य दक्षिणस्य पुरः स्थिरं दर्शयित्वा निजुञ्जीत विषानुकरणे नटः। आज्ये घृतानुकरणे अधोमुखं दक्षकरं संस्थाप्याग्रे प्रदर्शयन् आज्यानुकथने नाट्ये विनियुज्यात् विधानवित्। अमृतपाने सुधापान कथने उत्तानं तद्दक्षकरं कृत्वा चमनवत् पुरः दर्शयित्वा निजुञ्जीत सुधापानानुसूचने। प्रचंड पवने प्रचंड वायु संबंधानुकरणे पार्श्वयोस्तावधो वक्त्रौ प्रसाज्यौ तिर्यगायतौ पुनः संकोच्य संयोज्य चंडवायौ नियोजयेत्। वर्षणे वर्षणानुकरणे ऊर्ध्वाधो वदनौ हस्तौ कंपयित्वा मुहुर्मुहुः स्थापयित्वा निजुञ्जीत वर्षानुकरणे नटः। प्रांत नृत्ये नृत्यावसान कृत्ये अधोमुखौ करौ तद्वत् द्रुततालानुकारिणौ मानं दत्त्वा दर्शयित्वा जुन्यान् नृत्य समापने। केशवेशे केश संस्कारानुकरणे अधोमुखं दक्षकरं चालयन् मस्तकोपरि केशवेशानुकारेण निजुञ्जात् केश संस्कृतौ।
इति अराळ हस्तलक्षण निर्देशः। सुकतुंड हस्तलक्षणम तर्जन्य नामिके वक्रे यदि स्याता मधुमुखौ असाबराळ हस्तोपि सुकतुंडकरो भवेत्। बाणजोगे बाणजोजनानुकरणे तिर्यगग्रगतं दक्ष्य हस्तमाकुञ्चते यदि सप्रयोज्यो बुधेर्बाण प्रयोगस्यानुसूचने कुञ्चितार्थे कुञ्चितार्थ प्रयोगे तथैव दक्षिणं हस्त मग्रतः पश्चिमं पुनः आकुञ्च्य चाकुञ्चितार्थ प्रयोगे विनियोजयेत्। नाट्यांग चलन क्रमे नाट्यचलितानुकरणे हस्तद्वयं पार्श्वतस्त तदध ऊर्ध्वमुखं मुहुः कृत्वा नियोजयन्नाट्य चलनाक्रम सूचने। मर्माख्यायम मर्म वाक्यानुकथने दक्षं स्वाभिमुखं हस्तं हृदि तिर्यं निवेश्य च संस्थापयित्वा जुञ्जीत मर्म वाक्यानुसूचने। उग्रभावे उग्रभाव प्रयोगे कराबूर्ध्व शिखौ कृत्वा स्कन्धयोरुपरि क्रमात् पराभिमुखमायुज्य जुञ्ज्यादुग्र नियोजने। इति सुकतुंड हस्तलक्षण निर्देशः। मुष्टि हस्तलक्षणम दृढ़माकुंचिताग्राण मंगुलीनामुपर्जथः अंगुष्ठं वेष्टयेत् चेत् स्यात् मुष्टिहस्तः प्रकीर्तितः। स्थिरे स्थिरत्वानुकथने अग्रतो दक्षिणं मुष्टिं स्थिरं कृत्वा प्रदर्श्य च विनियुञ्ज्यात् तथा नाट्ये स्थिरभावानुसूचने। कचग्रहे केशग्रहानुकरणे प्रसाद्य दक्षिणं मुष्टिं दर्शयित्वा स्थिरं पुरः केशग्रहानुकरणे नर्तको विनियोजयेत्। मुंडे छिन्नमस्तकानुसूचने वाममुष्टिं पुरः कृत्वा दक्षिणे छेदयन्निव दर्शयित्वा नियुञ्जीत छिन्नमस्तकसूचने। मल्लयुद्धभावे मल्लयुद्धानुकरणे मुष्टिद्वयं पुरः पश्चादाकृष्य दर्शयन्निव पार्श्वद्वये नियुञ्जीत मल्लयुद्धानुसूचने। तांडवे तांडवनाट्य कथने मुष्टिद्वयं पुरः पार्श्व द्वये शीघ्रं विलोडयन् नियोजयत् तांडवाख्य रौद्र नृत्यानुसूचने। कृपणे कृपणलोकानुकरणे मुष्टिं च दक्षिणं दक्षे पार्श्वे गाढं प्रदर्शयन् नियुञ्ज्यात् कृपणस्यैव जनस्य परिसूचने। इति मुष्टिहस्तलक्षण निर्देशः। शिखरी हस्तलक्षणम मुष्टिहस्तो परिष्टाच्चेत् भवेदंगुष्ठ उन्नतः नाट्यंगाभिनये योज्यः सः मतः शिखरीकरः। मदने कंदर्प भावे वामहस्तं पुरः कृत्वा संकोच्याकृष्य दक्षिणं दर्शयित्वा स्थिरं जुञ्ज्यात् क्रमान् मदन सूचने। कार्मुके धनुर्धारणानुकरणे प्रसाज्य वामं पुरतः स्वहस्तं पार्श्वतः क्षिपन् दर्शयित्वा नियुञ्जीत नटः कार्मुकधारणे।
स्तंभे स्तंभानुकरणे पार्श्वाग्रे दक्षिणं हस्तं स्थिरं कृत्वा वधारयन् दर्शयित्वानुकुर्वीत ख्यात स्तंभानुसूचने। कुंभे कलशानुकरणे दक्षमुष्टि भूमिगता पूर्णकुंभानुसूचने ऊर्ध्वगाचेद गृहाग्रस्थ कलशस्यानुसूचने। पुलके रोमांचितानुकरणे हृदि लग्नौ करौ कृत्वा ऊर्ध्वमुत्क्षिप्य तौ पुरः दर्शयित्वा निजुञ्जीत पुलकानुकृतौ नटः। कूर्मे कमठानुकरणे उत्तानमुष्टिजुगलं मिथोङ्गुष्टकरद्वयं योजयित्वा निजुञ्जीत कमठानुकृतौ नटः। पत्यौ एकपत्यनुकरणे अग्रतो दर्शयित्वा तु दक्षिणं करमुच्छ्रितम् ऊर्ध्वाङ्गुष्ठं निजुञ्जीत स्वकान्तस्यानुसूचने। एते शिखरि हस्तस्य विनियोगाः प्रकीर्तिताः। कपित्थ हस्तलक्षणम् अंगुलीत्रयमाकुंच्य तदंगुष्ठेन पीडयन् तर्जन्यावेष्ट्य तस्याग्रं कपित्थ करमीरयेत्। लक्ष्मी लक्ष्मी रूप प्रयोगे मिथोभिमुखमाश्लिष्टं तत्कपित्थ करद्वयं दर्शयित्वा निजुञ्जीत लक्ष्मी रूपानुसूचने। सरस्वत्यां तत्स्वरूप सूचने अंशदेशे नियोज्यैव वाममुष्टि मदोमुखं जानुपरि तथा दक्षं सरस्वत्यां नियोजयेत्। पार्वती सूचने प्रसार्य दक्षिणं मुष्टिं तिर्यगग्रे प्रदर्शयन् पार्वती सूचने युञ्जा दिदृशं करबन्धनम्। नाट्यतालावधारणे तालधारणवत् कृत्वा मिथः स्वाभिमुखौ करौ तालाङ्गधारणे धीरो निजुञ्जीत यथा तथम्। धूपार्पणे तदनुकरणे दक्षमुष्टिं दधतिर्यक् सव्यासव्य दिशिक्रमात् आन्दोलयित्वा जुञ्जीत धूपदानानुसूचने। दीपे तंच मुष्टिं पुरेण्यस्य भ्रामयित्वार्धमुन्नयन् निजुञ्जा तादृशं मुष्टिं दीपदानानुसूचने। लज्जानुकृतौ संकोचानुकरणे तिर्यगूर्ध्वमुखं मुष्टिं कर्णान्ताच्चिबुकावधि दक्षिणे दर्शयन् युञ्जात् लज्जानुकरणे नटः। वस्त्रगुंठने अवगुंठन पटानुकरणे यथा लज्जानुकरणं तथा त्रीव नियोजयेत् उष्ठदेशाच्छादनवत् केवलं दर्शयेत् करम्। इति कपित्थ हस्तलक्षणम्। खटकामुख हस्त तर्जन्यन्तरितांगुष्ठे कपित्थ कर पीडिते खटकामुखो हस्तोऽसौ कथितो नाट्यवेदिभिः। वाहनस्य हयस्य आक्षेपार्थं यत् बल्गाग्रहणं वाममाकुञ्च्य हस्ताग्रं प्रसार्य च सकूर्पणं बल्गाग्रहणवत् कृत्वा
बाहाक्षेपे नियोजयेत्। पाद सेवने पाद संवाहनानुकरणे मुष्टिजुग्मं पुरः कृत्वा कंपयित्वा नतोन्नतं पद संवाहने कृत्ये निजुञ्जान्नाट्यकोविदः। भेके भेकानुकरणे अधोमुखं चतं मुष्टिं प्रसार्य च पुरः पुरः भेकानुकरणे नाट्ये निजुञ्जान्नाट्यकोविदः। उल्लुके पेचकानुकरणे अन्योन्याभिमुखौ श्लिष्टौ मुष्टिं कृत्वा पुरो भुवि निजुञ्जान्निपुणो नाट्ये पेचकस्यानुसूचने। प्रसूयां प्रसवानुकरणे कृत्वाधः शिखरं मुष्टिं पुरतो भूगतं तथा नियोजयेत् गर्भिणीनां प्रसवानुकृतो नटः। हीरे हीरकरत्न सूचने तदंगुष्ठनखं मुष्टे बहिर्निस्सार्य दर्शयन् वज्रादिरत्न कथने यथा बलि नियोजयेत् इति खटकामुख लक्षण निर्देशः। शुचिमुखहस्तः खटकामुखहस्तस्य सरला तर्जनी यदि तन्मूलतो कृतेंगुष्ठे शुचिमुखः करः स्मृतः। एकार्थे एक संख्यानुकरणे करंकुत्वोर्ध्वशिखरं दर्शयित्वाग्रतः परम् एक संख्यानुकरणे नर्तको विनियोजयेत्। परं ब्रह्म भावानुकरणे तमेव हस्तं हृदये नियोज्य विनिमीलितं सरलांगो नियुञ्जीत परम ब्रह्म भावने। सत्ते शतसंख्यानुकथने उदग्रं तर्जनीकं तं हस्तमग्रे निवर्त्य च भ्रामयन् दर्शयित्वाग्रे जुञ्जात् शतनिरूपणे। रबो सूर्यबिम्बानुकथने मस्तकोपरि हस्ताग्र मुच्छ्रितं दर्शयन् दिवि भ्रामयन् मण्डलाकारं जुञ्जात भास्कर मंडले। नगर्ज्यां नगरी रूपानुकरणे महायतं समुच्छ्रित्य दक्षिणं करमात्मनः परितो भ्रामयन् जुञ्जान् नगरी रूपदर्शने। लोकार्थे भुवनानुकथने अधाः शिखं दक्षकरं सप्तधा भ्रामयन्नधः ऊर्ध्वं तथा भ्रामयित्वा जुञ्जात् भुवन सूचने। बेत्रधारणे बेत्रधारणानुकरणे उदग्रं दक्षिणकरं प्रसार्य दर्शयन् पुरः बेत्रहस्तानुकरणे निजुञ्जीत नटोत्तमः। यत्तत् शब्दार्थ सूचने तिर्यगग्रं करं कृत्वा दक्षिणं दर्शयन् पुरः निर्दिशन् निवजुञ्जीत
यच्चत् शब्दार्थ सूचने व्यजनार्थे चामरानुकरणे उदग्रं दक्षिणं हस्त मांदोल्य तमितस्ततः व्यजयन् निवजुञ्जीत चामरानिल सूचने। तर्जनी दर्शने तर्जन्यानुकरणे ऊर्ध्वाग्रं दक्षिणकरं तर्जयन् निवदर्शयन् तर्जनानुकृतो युज्यात् तर्जन्यंगुली दर्शने। अम्बुधौ समुद्रानुकरणे तिर्यगूर्ध्वमुखौ हस्तौ पुरः संयोज्यतौ पुनः परितो भ्रामयन्नूर्ध्वं युञ्ज्यात् जलधि दर्शने। नासा प्रदर्शने नासादण्डानुसूचने नासिकाग्रे प्रवीण्यस्य हस्तं दक्षिणमुच्छिकं निजुञ्जीत स्थिरं कृत्वा नासादण्डानुसूचने। इति शुचिमुख हस्तलक्षण निर्देशः। पद्मकोशहस्तः पद्मकोशनिभं कृत्वा विस्तुताङ्गुलिकं परां स भवेत् पद्मकोशाख्यः करोऽभिनयकर्मणि। कमले पद्मानुकरणे ऊर्ध्वास्यतं करं कृत्वा सरलीकृत्य कूर्परं पद्मकोशानुकरणे करमेवं नियोजयेत्। वल्मीके वल्मीकस्थाने अधोमुखौ करौ कृत्वा भूलग्न शिखरौ तथा दर्शयन् विनियुञ्जीत वल्मीकस्थान सूचने। घंटायां घंटानुकरणे अधोमुखं करं कृत्वा दक्षिणं पुरतः स्थिरं घंटानुकरणे धीर तथा हस्तं नियोजयेत्। कंदुके पुष्पकंदुकानुकरणे पद्मकोशानुकरणं यथा तद्वत् करं पुनः दर्शयित्वा कुञ्चिताग्रं किञ्चिद्युञ्जित कंदुके। वर्तने वाणिज्यानुकरणे करमूर्ध्वमुखं कृत्वा वामतो दक्षिणं क्रमात् चालयित्वा नियुञ्जीत वर्तनावृत्ति दर्शने। दर्पण धारणानुकरणे करं स्वाभिमुखं कृत्वा दक्षिणं सरलाकृतिं नियुञ्जीत दर्पणस्य धारणानुकृतौ नटः। चूतफलादौ तत्फलाकारानुकरणे उत्तानस्यं दक्षकरं कृत्वा कुत्मलिकाग्रकं च्यूतबिल्वादिकफला नुकृतो विनियोजयेत्। पुष्पकोरके कोरकस्तवकानुकरणे च्यूतानुकृतिबद्धस्तं कृत्वा कोरकशोचने। कर्णिकारे कर्णिकारानुकरणे किंचित संकोच्य तं हस्तं कर्णिकारे नियोजयेत्। पुष्पवर्षे पुष्पवृष्ट्यनुकरणे ऊर्ध्वमुद्यन्न शिरसो धूमुखं दक्षिणं करं कंपयन् भ्रामयन् युञ्ज्यात् पुष्पवृष्ट्यनुसूचने। शाखायां शाखाभिदये यथा करं संदर्शयेत् दक्ष्यं भ्रामयन् सर्वतो मुखं निजुञ्जात् तरुशाखानां तथा भिदय कर्मणि।
कोमले मृदुशाकानुकरणे भूलग्न पृष्ठं स्वकर मुन्नतास्यं प्रचालयन् मृदुशाकाद्यनुकृतौ हस्तमेवं नियोजयेत्। दिम्भे दिम्भानुकरणे कुट्मलाग्रं करं कृत्वा पुरः ऊर्ध्वमुखं तथा दिम्भानुकरणे धीरो तथा नाट्ये नियोजयेत्। व्याघ्रे व्याघ्रानुकरणे वाममूर्ध्वमुखं कृत्वा दक्षिणं चेदधोमुखं संयोज्य मणिबन्धौ द्वौ युञ्ज्यात् व्याघ्रस्य सूचने। मर्कटास्ये तदानुकरणे पराभिमुखमुच्छ्रित्य करं दक्षिणमग्रतः किंचित् संकुचिताग्रं च युञ्ज्यात् कप्यास्य सूचने। राहोरास्यानुकरणे प्राङ्मुखं दक्षिणं हस्त मूर्ध्वमुच्छ्रित्य दर्शयन् राहोर्मुखानुकरणे निजुञ्जीत तथा करम्। कुचाकृतौ स्तनाकारानुकरणे हृदयाभिमुखौ कृत्वा करौ संयोज्यतौ मिथाः नारीस्तनानुकरणे निजुञ्जादिदृशौ करौ। पात्रे भाण्डानुकरणे करद्वयं चाभिमुखं संयुतं मणिबन्धयोः ऊर्ध्वं संदर्शयन् युञ्ज्यात् भाण्डाद्यनुकृतौ नटः। तुंदिलाकारे बृहत्तुंदानुकथने स्वतुंदाभिमुखं कृत्वा करं तुंदनिवेशितं